Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So class, in our previous session, as you all know, that we were discussing unit number 5, okay, and we have already discussed some of the topics from the unit number 5, okay. So in this session as well, I'm going to continue with the same unit, okay, that is 5, and the name of the unit is language, literature, legends and myths. Okay, so this is the unit. Okay, so as we have already done some of the topics from the unit number 5, so today I'm here with you to start with the next topic, that is in conversation. Okay, so this topic is given at page number 56. So all of you kindly open your books at page number 56, that is in conversation. Okay, so here I'm just writing the topic on the board. Okay, so that is in conversation. This is the topic, that is in conversation, and this topic is given at page number 56. The page number is 56 and the unit number is 5. Okay, in conversation. So first of all, let's discuss that what is the meaning of the topic in conversation. इसका मतलब क्या है? Okay, so here it is given. Try to guess what is being talked about in these sentences and write the answers in the blank. Okay, तो देखिए इसमें नीचे आप देखिए there are 10 sentences are given and a blank is given at the end of the every sentence. Okay, and in each sentence certain clues are given about something and you need to identify the thing that about what the clues are being given. ओके तो यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटेंसेस दिए बेटा और हर सेंटेंस के एंड में यू कैन सी देयर इज अ ब्लैंक, तो ब्लैंक है. ओके, एंड इन सेंटेंसेस में उन्होंने कुछ क्लूज दिए हुए हैं. ओके, सो इन दिस सेंटेंसेस दे हैव गिवन सम क्लूज अबाउट समथिंग. तो कुछ अलग अलग चीजों के बारे में उन्होंने क्लूज दिए हुए हैं एंड व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें करना क्या है, हमें वो क्लूज को पढ़ते हुए समझते हुए आइडेंटिफाई करना है कि हम किस चीज के बारे में बात करें, अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस chapter or in this sentence. Okay, so you need to identify the thing about what we are talking about in the sentence. So that means in conversation. Conversation का मतलब क्या होता है? When we are talking to someone. Okay, so I am conversating with you. ओके, सो वैसे ही इसमें भी कुछ किसी चीज के बारे में जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो जनरली है कोई ना कोई टॉपिक होता है. कभी रैंडम टॉपिक्स होते हैं, कभी कुछ फैमिलीज की बातें होती है, कुछ प्रोफेशनल्स बातें होती हैं. ओके, सो वैसे ही इन कॉन्वर्सेशन इस टॉपिक में बेटा, okay, so there are certain sentences in which certain clues are given and we need to identify that about what we are talking about. Okay, about what being talked in this given sentence. Clear? So let's begin with the first one. The first is, it was shining brightly after a week of rain, so we decided to go for a picnic. Okay, so देखिए अच्छा, one more important thing. In the sentences you can see there are certain words that are given in bold colors, that are written in bold color letters. Okay, तो देखिए it, so it is written in bold letter. So it was shining brightly after a week of rain, so we decided to go for a picnic. एक हफ्ते की बारिश के बाद ये बहुत, आफ्टर अ वीक ऑफ रेन, एक हफ्ते की बारिश के बाद ये चीज बहुत जबरदस्त चमक रही थी आसमान में, तो हम सबने डिसाइड किया कि सो लेट अस गो फॉर अ पिकनिक. तो देखिए हफ्ते की बारिश के बाद, एक हफ्ते आफ्टर 1 वीक ऑफ रेन, क्या चीज चमकेगी आसमान में? तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सन. सो सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई आफ्टर अ वीक ऑफ रेन. तो जैसे कि आजकल हमारा जो मौसम है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. ओके, सो आफ्टर अ वीक, ओके, आई थिंक मोर देन 10 days it has been, so we have not seen the proper sun. ओके, तो अभी तक देखो बारिश इतनी हो रही, तो वैसे ही आफ्टर अ वीक ऑफ रेन it was shining brightly, so it means here we are talking about this sun. Okay, so they decided to go for a picnic. So here the it means sun. So the answer for the first blank is sun. S-U-N. Sun means
सूरज, तो यहाँ पे सूरज की बात हो रही है, सन की बात हो रही है. क्लियर? चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द सेकंड वन. द डायरेक्टर शॉट इट एंटायरली इन अ रिमोट वैली. When it was screened, it received many awards. ओके, तो डायरेक्टर ने इसको एक रिमोट वैली में शूट किया. ओके, रिमोट वैली मीन्स ऐसा एरिया जहां पे ज्यादा मतलब जो डेवलपमेंट नहीं होती, जहां पे ज्यादा लोग रहते भी नहीं है, अनडेवलप्ड एरिया नहीं होता, बहुत ज्यादा उस वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं. ओके, सो द डायरेक्टर शॉट इट इन एंटायरली रिमोट एरिया. तो डायरेक्टर ने इसको एक बिल्कुल ही रिमोट एरिया में शूट किया इस चीज को. इट वॉज स्क्रीन सॉरी व्हेन इट वॉज स्क्रीन इट रिसीव्ड मेनी अवार्ड. और जब इसकी स्क्रीनिंग की गई, जब इसको दिखाया गया, तो इसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते. सो देखिए, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर. तो डायरेक्टर क्या कहता है? डायरेक्टर डायरेक्ट्स द मूवी. डायरेक्टर डायरेक्ट्स द मूवी और द फिल्म. ओके, so here it means film. We are talking about the movie, we are talking about the film here. Okay, so question देखिए, the director shot it, that is written in capital in bold letters, entirely in a remote area. तो डायरेक्टर ने इसको पूरे एक रिमोट एरिया में शूटिंग की इसकी. और जब इसको स्क्रीनिंग पे दिखाया गया, जब इस मूवी को स्क्रीन किया गया, जब इसको दिखाया गया, प्रीमियर रखा गया या मूवी थिएटर्स में आई, तो इसके बाद लोगों को ये बहुत पसंद आए एंड इट हैज ऑल्सो रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिल्म और अ मूवी. सो यू कैन राइट फिल्म और मूवी, सो वट एवर यू वॉन्ट. सो आई जस्ट राइट ऑन द फिल्म. सो द आंसर फॉर द सेकेंड वन इज फिल्म. FILM, film. Film. Okay. Moving next to the third one. He had been waiting the whole day for it to ring. When it did, he rushed to pick it up. Okay, so here they have mentioned he had been waiting the whole day for it to ring. So now here we are talking about a person who is waiting for it to ring. So what will ring? टेलीफोन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फोन, द टेलीफोन. तो वो पूरा दिन उसके बजने का इंतजार करता रहा. एंड व्हेन इट डिड ही रश टू पिक इट अप. और जैसे ही घंटी बजी, व्हेन इट रिंग, तो वो भाग के उसने उसको उठा लिया. वही रश्ड मीन्स भाग के जाना, टू पिक इट अप उसको उठाने के लिए. ओके, सो देखिए, द क्वेश्चन इज ही हैड बीन वेटिंग द होल डे फॉर इट टू रिंग. तो पूरा दिन इंतजार करता रहा. ओके, फॉर द रिंग. सपोज ही वाज वेटिंग सम, दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर सम इंपॉर्टेंट कॉल. ओके, एंड जैसे ही घंटी बजी, तो उसने भाग के उसे उठा लिया. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द phone, the telephone, the mobile phone. It can be anything, but here we are talking about the phone. Okay, so the answer for the third blank is, that is phone. PHONE, that is phone. So P will be capital. Here we are talking about the phone. Okay, moving next to the fourth one. Its lens is very sophisticated and it took some wonderful and I took some wonderful photos with it. Okay, so इसका जो लेंस है, that is very sophisticated. Sophisticated means बहुत ही नाजुक है, बहुत ही मतलब, though it is very बहुत अच्छा है. ओके, बट इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड. कहते हैं बहुत ही मुश्किल से, मतलब बहुत ही नाजुक होना. ओके, सो उसका जो लेंस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि उसका लेंस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही नाजुक है. एंड आई टुक फॉर सम वंडरफुल फोटोज विद इट. और मैंने इससे बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स आई हैव टेकन फ्रॉम इट. सो आई हैव टेकन वेरियस ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स बाय यूजिंग दिस. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैमरा. So we took photograph with the camera, चाहे वो DSLR हो, DSLR camera, whether it's your mobile phone camera. So we always took photographs with the help of camera. But here the one thing they have been mentioning here, they have mentioned here that they are talking about the lens. The lens is very sophisticated. So lens देखिए, हमारे जो कैमराज होते हैं, जो मोबाइल फोन्स के कैमराज होते हैं, उसमें भी लेंस होता है, बट वो इनबिल्ट होता है. बट जो DSLR या प्रोफेशनल कैमराज होते हैं, so they have separate lens, so they have to fix it up before they want to use those cameras. Okay, so now it is being said here, so they are talking about the lens. So its lens is very sophisticated and I took some wonderful photos with it. So here we are talking about the camera.
So here we are talking about the camera. So the answer for the fourth one is camera. CAMERA. So here we are talking about the camera. Moving next to the fifth one. The fifth is, it was so strong that it blew the electricity pole down. वो इतनी strong थी, वो चीज इतनी strong थी, इतनी मजबूत थी, इतनी ताकतवर थी कि उसने इलेक्ट्रिसिटी पोल को भी गिरा दिया, उसने इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के खंबे को भी गिरा दिया. सो कैन अ पर्सन, क्या एक ह्यूमन बीइंग इलेक्ट्रिसिटी के पोल को गिरा सकता है? आर वी सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन इवन पुल डाउन अ इलेक्ट्रिसिटी पोल? नो. सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग. देखिए, इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग, इट ब्लू, उसने ब्लू कर दिया, गिरा दिया, उड़ा दिया द इलेक्ट्रिसिटी पोल डाउन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द विंड. सो जनरली ये नॉर्मल विंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी भी तरह के तूफान की बात हो रही है. ओके, सो द विंड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, जो विंड थी, वो हवा थी, वो इतनी तेज थी कि दैट इट ब्लू द इलेक्ट्रिसिटी पोल डाउन. तो उसने की बिजली के खंबे को भी उड़ा दिया, ओके, गिरा दिया. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द विंड. सो आंसर फॉर द फिफ्थ वन इज विंड. WIND. Wind. So it flew the electricity pole down. So here we are talking about the wind. WIND, wind. So these are the answers from 1 to 5. The first is sun, second is film, third is phone, fourth is camera, and the fifth is wind. So now we'll move to the next one. So that is the sixth one here. So sixth is, it has been aching all day. My dentist said it needs a filling. So it has been aching all day. Yes, aching means दुखना, दर्द होना. So it has been aching all day. सारा दिन दुखता रहा और मेरे डेंटिस्ट ने बोला, my dentist said it needs a filling. इसमें filling की जरूरत है. So that means, so when we go to the dentist, हम डेंटिस्ट के पास कब जाते हैं? We go to the dentist when we have some problem with our tooth or teeth. जब हमें tooth या teeth में कोई problem होती है, so we go to a dentist. Okay, so here they are talking about what? So it is, the dentist said it has been the person is saying that it has been aching all day. ये सारा दिन दुखता रहा. So that means they are talking about teeth या tooth की बात करें जो सारा दिन दुखता रहा. My dentist said it needs a filling. और डेंटिस्ट ने क्या बोला कि इसमें फिलिंग की जरूरत है. तो देखिए, जो हमारे teeth होते हैं बेटा, these are quite strong, these are quite sharp. Okay, तो इसके बीच में कोई ज्यादा यहाँ पे कुछ स्पेस नहीं होती. बट आपने देखा होगा कई बार डेंटिस्ट कई लोगों कहते हैं कि वो अपनी जो टूथ होते हैं, जो जॉ होती है, वहां पे फिलिंग करवाते हैं. वहां पे कभी गैप आ जाता है, सो पीपल दे गो टू द डेंटिस्ट एंड द डेंटिस्ट डू द फिलिंग. तो जो गैप्स आ जाते हैं हमारे जॉ में, तो वहां पे जॉ में या टूथ में जो गैप आया था उसमें डॉक्टर फिलिंग करते हैं, डेंटिस्ट फिलिंग करते हैं. Okay, so that means filling किसमें हो रही? तो teeth में नहीं हो रही. The filling is being done in the tooth. Okay, so it has been aching all day. My dentist said it needs a filling. So here we are talking about the tooth. TOOTH. Okay, so that is tooth. TOOTH. That is tooth. So here we are talking about the tooth. Next. The seventh one, she kicked it hard and it went straight into the goal. So she kicked it hard and it went straight into the goal. उसने उसको इतनी जोर से किक मारी कि वो डायरेक्ट गोल में चला गया. So गोल किस में जाएगा? गोल मीन्स, देखिए, either the goal is in the hockey or either it's in the football. फुटबॉल या हॉकी में ही गोल होते हैं. Okay. सो अब बास्केटबॉल में बास्केट होती है, क्रिकेट में रन्स होते हैं. सो वैसे ही यहाँ पे गोल की बात हो रही है. ओके, सो गोल किस में होता है? हॉकी में या फुटबॉल में. बट शी किक्ड इट हार्ड, सो यू कांट किक अ हॉकी बॉल. ओके, सो यू नीड टू हिट द, जो आपको हॉकी बॉल है, यू विल किक द, एक्चुअली वी डोंट किक द हॉकी बॉल, वी हिट द हॉकी बॉल. तो हम हॉकी बॉल को, जो हॉकी की बॉल होती है, उसको वी हिट इट विद अ हॉकी स्टिक. सो वी किक फुटबॉल. सो शी किक्ड इट so hard
that it went straight into the goal. So that means, so here we are talking about the football. So here we are talking about the football, that she kicked the ball so hard that it directly went into the goal. So that means we are talking about the football. 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 That is football. Moving next to the 8th one. The 8th is, it is the best one in town. I regularly borrow books from there. ओके और ये हमारे शहर में, दिस इज अ बेस्ट वन इन टाउन. सो ये हमारे शहर की सबसे बेस्ट चीज है. ओके सबसे बेस्ट है. एंड आई रेगुलरली बोरो बुक्स फ्रॉम एयर. मैं वहां पर ज्यादातर जो बुक्स बोरो करने जाता रहता हूँ. सो वेयर यू कैन फाइंड द बुक्स. सो आइदर यू कैन फाइंड द बुक्स ऑन अ बुक स्टॉल और अ बुक शॉप और अ बुक स्टोर और इन द लाइब्रेरी. So these are the 4 places, by bookshop, bookstore, or book stalls, bookstore shops are all the same, or in the library. Okay, so you can borrow books from the library only. You can't borrow books from the bookstore. So you need to purchase it from the bookstore. So bookstore से we purchase the book. We don't borrow books from the bookstore. Okay, जो bookstore हो, book stall हो, okay, तो हम वहां से कभी भी books borrow नहीं करते. We always purchase books. But here they have mentioned about borrowing the book. So we borrow the book from the library. So we borrow the book from the library. So it is the best one in town. I regularly borrow books from there. So here they are talking about the library. Because we borrow books from the library, not from the bookstore or the bookshops. So the answer for the 8th one is library. That is library. That is the answer of the 8th one, library. Okay, chaliye moving next to the 9th one. The 9th is, I fell heavily all night. By morning everything around was white. We celebrated a white Christmas. Okay, so I fell heavily all night. मुझे रात भर ठंड लगती रही. मुझे रात भर मतलब they just felt very cold during the all night. Okay, by the morning everything around was white. और जैसी सुबह हुई उनके हर तरफ हर चीज सफेद थी. So when they looked out of their house, they found everything is covered with white. Okay, and we celebrated a white Christmas. और हमने white Christmas celebrate किया. तो that means आपको ठंड लगी. Okay, सुबह उठ के बाहर देखो तो हर तरफ हर चीज सफेद थी. Okay, and you have celebrated the white Christmas. So Christmas comes in the month of December. Okay, but here we are talking about the snow. तो देखिए इंडिया में ऐसी स्नो नहीं पड़ती है ड्यूरिंग द क्रिसमस. मे बी इन द जम्मू एंड कश्मीर इट इज पॉसिबल, बट नॉट इन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया. इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव स्नो लाइक दिस. ओके, सो हियर इट इज बीइंग सेड, आई फेल हैवीली ऑल नाइट. बाय मॉर्निंग एवरीथिंग वाज वाइट. मुझे रात भर ठंड लगती रही. आई फेल वेरी कोल्ड ऑल नाइट. एंड बाय मॉर्निंग उन्होंने क्या देखा कि हर तरफ हर चीज सफेद, एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो. सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज वाज लुकिंग व्हाइट. ओके, वी सेलिब्रेटेड अ व्हाइट क्रिसमस. और हमने व्हाइट क्रिसमस सेलिब्रेट किया. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्नो. हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्नो. सो द आंसर फॉर द 9th वन इज स्नो. SNOW. दैट इज स्नो. SNOW, snow. Okay, moving next to the last one. I always use it to look up the meaningful. I'll always look. I'll just read it again. I always use it to look up the meaning of a difficult word, and when I am in doubt about how to use a word. Okay, तो मैं हमेशा इसमें देखता रहता हूँ जब मुझे किसी डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता है, एंड जब मुझे किसी वर्ड के मीनिंग का कुछ डाउट होता है. So we look into the dictionary. Okay, so we always look into a dictionary if we want to find a meaning of any word. अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता है हम किसमें ढूंढते हैं? We always look for a dictionary for the correct meaning of a word. Okay, so here we are talking about the dictionary. So the question was, I always use it to look up the meaning of a difficult word, or when I am in doubt about how to use a word. So we always look for a dictionary. So the answer for the 10th one is dictionary. That is dictionary. DICTIONARY.
RY. See, we always look for a dictionary. Clear? So these are the answers from 1 to 10 from the page number 56. You can pause it here and note down all the questions, all the answers in your book with correct spellings. Okay? Chali. So now we are having some more time left. So we will move to the next topic. Okay, that is Indian authors, which is given at page number 60. So all of you kindly open your books at page number 60, which is the next topic from the unit number 5 only. And the topic is Indian authors. And this is given at page number 60. Okay, so I'm just writing the topic here. That is Indian authors. Okay, and this is given at page number 60. Okay, so in the page number 60, we are here, they have mentioned the name of the book. Okay, and we need to write down the name of the authors, Indian authors, जिन्होंने वो books लिखी हैं. So here the certain name of some books are given, some very famous books are given, and we need to write down the name of the authors, those who have written this book, जिनकी वो those who have written those great writings are written by them. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं और हमें उन ऑथर्स के नेम लिखने जिन्होंने ये लिखी है. एंड ऑल आर इंडियन ऑथर्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. So here they have mentioned in the heading, write the name of the authors whose books are given below. Okay, so let's begin with it without wasting any more time. So the first is Coolie. Okay, so the first is Coolie. So Coolie is the name of the book. So who wrote Coolie? So Coolie is written by Mulk Raj Anand. Okay, so this is the story. So this is the book that is written by Mulk Raj Anand. So देखिए बेटा, as I am not very fond of reading books, especially novels, so I will tell you the spellings of some of the. I'll tell you the story about some of the books. Okay, but I can't promise that I will tell you all the stories of all the books. Okay, so Coolie is written by. So who is the author of the book Coolie? So that is Mulk Raj Anand. So the answer for the first book, that is Coolie, is Mulk, M-U-L-K, Mulk Raj Anand. He is the author of the book Coolie. Moving next to the second one. The second is Train to Pakistan. So this is another book. Okay, and this book is written by one of the very famous Indian author. He is Khushwant Singh. Okay, so he is Khushwant Singh. So he has written this very popular book, that is Train to Pakistan, जिसमें कि उन्होंने एक story बताई है कि that when this story is about during the partition of India and Pakistan, जब इंडिया और पाकिस्तान का partition हुआ तो उस time की ये story है कि that how people they manage to, those who want to live in Pakistan and those who want to live in India, that how they manage to travel during that time, difficult time. So this is a book written by the one of the very famous author, that is Khushwant Singh. Okay, so the answer for the second one is Khushwant Singh. Khushwant. That is Khushwant Singh. So Khushwant Singh is the author of the book The Train to Pakistan. Okay, moving next to the third one. Okay, the third is an autobiography of an unknown Indian. An autobiography of an unknown Indian. एक unknown Indian की autobiography. Autobiography means अपनी खुद की कहानी. तो देखिए, एक autobiography जो मोस्टली हम पढ़ते हैं या किसी फेमस पर्सनालिटी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं. बट अब देखिए, इस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन. एक ऐसा भारतीय जिसको कोई नहीं जानता, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है. सो दिस यूनिक बुक इज रिटन बाय वन ऑफ द वेरी फेमस ऑथर ऑफ इंडिया. ही इज Nirad C. Chaudhary. He is Nirad C. Chaudhary. So the answer for the third one is Nirad C. Chaudhary. Chaudhary. That is Nirad C. Chaudhary. Okay. Next. Malgudi Days. Yes, this is one of the very famous book for the children especially.
Malgudi Days. So the who is the author of Malgudi Days? So the author of Malgudi Days is R.K. Narayana. Okay, R.K. Narayana. Okay, so he is the author of the book, The Malgudi Days. And Malgudi Days is the story about a boy whose name is Swami. Okay, and during his childhood period, he was living in one of the town. So Malgudi is the name of the town where he used to reside with some of his friends. वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ वहां रहता था. तो उन्होंने उस बुक में द मालगुडी डेज जो है बेटा, ओके, इसमें उन्होंने स्वामी और उसके फ्रेंड्स की अलग अलग स्टोरीज बताई हैं. ओके, दैट हाउ दे यूज्ड टू लिव इन दैट मालगुडी town, a small town. Okay, and ये बुक कितनी फेमस है कि इसके ऊपर कई देयर इज अ सम सीरीज, वेब सीरीज वेयर अभी बनाई गई है, नाटक भी आते हैं, मतलब थिएटर्स भी आर आल्सो देयर. ओके, सो द ऑथर ऑफ द बुक द मालगुडी डेज इज R.K. Narayana. Narayana. R.K. Narayana. Moving next to the fifth one, The Shadow Lines. So who is the author of the book, The Shadow Lines? So the author of the book, The Shadow Lines is Amitav Ghosh. It is not Amitabh. It is Amitav. Amitav Ghosh is the author of the book, The Shadow Lines. That is Amitav, Amitav. So Amitav Ghosh, Ghosh. Amitav Ghosh is the author of the book, The Shadow Lines. Okay, so these are the name of the some famous Indian authors. So answer from 1 to 5. So kindly pause your videos and write down the name of these famous authors. Chalo, now we will move to the next one. That is the sixth one. Chalo, so sixth is, the sixth book that is given here is The Palace of Illusions. So the next is The Palace of Illusions. So who has wrote the book The Palace of Illusions? So The Palace of Illusions is written by Chitra Banerjee Divakaruni. So his her name is little bit big. Okay, so the author of the book The Palace of Illusions is Chitra Banerjee Divakaruni. So write her name, that is Chitra Banerjee Divakaruni. Diva, Divakaruni. Divakaruni. Okay. So Chitra Banerjee Divakaruni is the author of the book The Shadow Line. The Palace of Illusions. Next, The Inheritance of Loss. So who is the author of the book The Inheritance of Loss? So the author of the book is Kiran Desai. So the author of the book The Inheritance of Loss is Kiran Desai. Kiran. That is Kiran Desai. Desai. That is Kiran Desai. So Kiran Desai is the author of the book The Inheritance of Loss. Next, the eighth one, The Room on the Roof. The Room on the Roof is also a story about for the children. And who is the author of the book? Okay, so the author of the book is Ruskin Bond. Okay, so The Room of Roof is the author of the book. The Room on the Roof is Ruskin Bond. The eighth is Ruskin Bond. Moving next to the ninth one. The ninth book is Midnight's Children. So who is the author of the book The Midnight's Children? So author is Salman Rushdie. Salman Rushdie is the author of the book Midnight's Children. That is Salman, Salman, Salman Rushdie. Rushide. That is Salman Rushdie. Moving next to the last one. So the last book is The Immortals of Meluha. So Immortals of Meluha book was written by Amish Tripathi. So the Immortals of Meluha book is written by the author of the book Immortals of Meluha is Amish Tripathi. Okay, so answer is Amish
Tripathi. Tripathi. That is Amish Tripathi. Okay. So these are the answers from 6 to 10. Okay. You can pause the video here and note down the name of the authors in your book at page number 60. Okay. So with this, I'm ending today's session as well. So I'll see you again very soon in our next session class. So till then, everybody, have a great day.